दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वन उस्ताद। आज हमारे पास एक हैंडसेट आया हुआ है, ये MI Note 6 Pro, जिसमें है लाइट की प्रॉब्लम। देखिए आपको दिखाते हैं, आपको हल्की हल्की झलक दिखेगी इसकी, जिसमें आपको फील हो जाएगा कि इसमें टेक्स्ट दिख रहे हैं बट लाइट नहीं आ रही है। ये देखिए रेडमी लिखा हुआ आ रहा है, आप गौर से देखेंगे तो, बट इसकी जो डिस्प्ले की लाइट है वो नहीं चल रही है, क्योंकि ये किसी शॉप से आया हुआ है और उन्होंने छेड़ रखा है इसे। तो बाकी हम चेक करते हैं इसमें क्या क्या फॉल्ट होता है। ये देखिए गौर से देखने पे रेडमी लिखा हुआ आ रहा है, ग्राफिक पूरा आ रहा है इसका, और लाइट की प्रॉब्लम है। चलिए इसको रिजॉल्व करते हैं हम। पहले बोर्ड को दिखा देते हैं आपको ओपन करके, क्योंकि ये शॉप से आता है तो हमारे पास ऐसे ही ओपन हैंडसेट आता है। ये देखिए जो लाइट सेक्शन है वहाँ पर कुछ वो बता रहे थे कि उनको शॉर्टिंग दिख रही थी तो उन्होंने निकाल दिया था, बट वो उनको पूरा कंफर्म नहीं होता, तो जो जो उनको मतलब आइडिया लगता है वो कर लेते हैं, उसके बाद हमें देते हैं। तो अब हम इसको रिपेयर करते हैं। पहले चेक कर लेते हैं, क्योंकि ओवर हीट भी हो रहा है हैंडसेट, तो पहले शॉर्टिंग वगैरह चेक कर लेते हैं अपनी तरफ से। तो दोस्तों, अगर आपको भी लाइट की प्रॉब्लम आ रही हो या फिर कुछ ऐसा इशू हो रहा हो जो आपका फ़ोन शॉर्ट हो गया हो, तो लाइट सेक्शन में सबसे पहले चेक करें शॉर्टिंग, क्योंकि जो वोल्टेज हैवी वोल्टेज होती है वो लाइट सेक्शन की होती है, क्योंकि वो कन्वर्ट होती है और बूस्ट होके जाती है। तो सबसे पहले जो हमारा लोड कैपेसिटर होता है वो शॉर्ट हो जाता है, और उसके साथ डायोड होता है वो शॉर्ट हो जाता है। तो पहले वही चेक कर लें आसपास, वहीं उसके कंपोनेंट में कोई शॉर्टिंग तो नहीं है। अगर शॉर्टिंग है तो आपको रिमूव चेंज करना पड़ेगा वो कंपोनेंट, अगर नहीं है तो वेल एंड गुड है, बाकी आप और जगह ट्रेस कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो है लोड कैपेसिटर वो शॉर्ट है, अभी भी दिखा रहा है, क्योंकि लाइट नहीं आ रही है और शॉर्टिंग भी है इसमें। ओवर हीटिंग की, जब तक शॉर्टिंग रहेगी लोड कैपेसिटर जो होता है वो ओवरलोड होने की वजह से इसमें प्रॉब्लम आती है। तो आपको इसे चेंज ही करना पड़ेगा, तभी आपका सॉल्यूशन होगा। तो हम इसको चेंज कर लेते हैं पहले। दोस्तों, हमने इसका लोड कैपेसिटर चेंज कर लेंगे, उसके बाद हम जो इसके नीचे एक पार्ट और मिसिंग है, इन्होंने उखाड़ लिया था, तो उसको भी लगाएंगे। जो है इसके नीचे डायोड जो होता है वो भी लगा लेंगे, फिर चेक करेंगे। और ओवर हीटिंग के कारण जो प्रॉब्लम होती है वो दोस्तों, जो बूस्ट कॉइल होती है उसे भी चेंज करना पड़ेगा हमें, तो हम उसको भी चेंज कर लेंगे।
क्योंकि जब वो वोल्टेज लोड नहीं लेता बूस्ट कॉइल तो प्रॉब्लम आती है। Can you stick through it with me or not? And it might take a minute, but we'll get it. The type of love that you want, like it. I know that you like it, yeah, you like it. I know that you like it, you like it. You said that you were down just yesterday, hoping you'll stick around and wait for me. I see you on the come up, but don't switch up on me. Yeah, I know that you, I know that you, I know that you, I know that you. You said that you were down, hoping you'll stick around, hoping you'll be around for me. You said that you were down just yesterday, hoping you'll stick around and wait for me. I see you on the come up, but don't switch up on me. Yeah, I know that you, I know that you, I know that you, I know that you. You said that you were down, hoping you'll stick around, hoping you'll be around me. You said that you were down, 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 down. I know that you like it. I know that you, I know that. You just always been a tighter rush that I've been laid back, yeah. I don't wanna skip steps, you know that. So if you're with it, then say yeah. I just need a little bit of patience. You need me, I know that you've been waiting. Down my number twice, promise I'll pick up the line. I see you worried, don't gotta ask why. You like it, I know that you like it, you like it, yeah, you like it. I know that you like it, you like it. You said that you were down just yesterday, hoping you'll stick around and wait for me. I see you wanna come up, but don't switch up on me. Yeah, I know that you, I know that you, I know that you, I know that you. You said that you were down, hoping you'll stick around, hoping you'll be around for me. You said that you were down, you said that you were down, you said that you were down. तो हमारा क्लीनिंग का और उसका कंपोनेंट का सारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब इसको हम प्रॉपर हीटिंग, हल्की सी हीटिंग देके इसे फिक्स कर लेंगे प्रॉपर पेस्ट लगा के, ताकि जो भी ड्राई शोल्ड वो ढंग से फिट हो जाए। और उसके बाद हम इसमें लगा के और से क्लीनिंग करके उसके बाद चेक कर लेंगे कि हमारा पीसीबी वर्किंग हुआ है नहीं। I know that you like it, you like it, yeah, you like it. I know that you like it, you like it. You said that you were down just yesterday, hoping you'll stick around and wait for me. I see you on the come up, but don't switch up on me. Yeah, I know that you, I know that you, I know that you, I know that you. You said that you were down, hoping you'll stick around, hoping you'll be around for me. You said that you were down just yesterday, hoping you'll stick around and wait for me. I see you on the come up, but don't switch up.
I know that you like it. तो इसको लगाने के बाद भी हम एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारे फ़ोन में शॉटिंग अब है या नहीं है, क्योंकि अगर शॉटिंग हो रहेगी तो आपके फ़ोन में प्रॉब्लम रहेगी। तो जो दोस्तों हमारी जो लोड कैपेसिटर में शॉटिंग थी वो चेक कर लेते हैं हम। और ये जो लोड कैपेसिटर है हमारा, इसमें शॉटिंग हट चुकी है, तो हम इसे लगा के चेक कर सकते हैं। और भी कहीं देख लेते हैं आसपास कहीं शॉटिंग है नहीं, डायोड पे भी नहीं है हमारे, तो हम इसको लगा के चेक कर लेंगे। पूरी तरीके से इसे चेक कर ले शॉटिंग वगैरह, क्योंकि कई बार अगर लोड कैपेसिटर वगैरह शॉर्ट होगा तो आपके जो नए कंपोनेंट लगाए होंगे वो भी शॉर्ट हो जाते हैं। इसलिए पहले तसल्ली कर लें, उसके बाद ही बैटरी लगाएं या फिर डीसी पे अप्लाई करें। तो देखिए आपको दिखा देते हैं, ये हमारी लाइट कम ऑन हैंडसेट ऑन कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं हमारी जो लाइट सेक्शन था वर्किंग हुआ नहीं हुआ। तो देखिए दोस्तों, ये सक्सेसफुली हमारी लाइट आ चुकी है, क्योंकि हमने इसमें लोड कैपेसिटर, बूस्ट कॉइल और डायोड तीनों चेंज कर दिए थे, जिसमें ही जो लोड कैपेसिटर था हमारा शॉर्ट हो जाता था जैसे ही हम ऑन करते थे, ट्रिगर देते थे, वोल्टेज इन होती थी, वैसे ही वो लोड कैपेसिटर ड्रॉप मारता था, जिसकी वजह से इसमें शॉर्टिंग आ जाती थी। तो हमने इसमें कम्प्लीटली लाइट सेक्शन का पार्ट चेंज कर दिया था, जिसके बाद हमारा जो प्रॉब्लम थी वो कम्प्लीटली रिजॉल्व हो गई। थैंक यू सो मच दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए, और बने रहिए हमारे साथ वन साथ पर यूट्यूब चैनल पे। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसी तरीके से हम आपको आपके सामने लाते रहेंगे फ़ोनों की प्रॉब्लम और उसके सॉल्यूशन भी। थैंक यू सो मच।